Okay, so let's try to understand, or let's try to deal with the topic how to stain a bacteria. Now we all know bacteria, they are microscopic. Okay, so in order to study the bacteria are of two different types. One is called gram positive bacteria and second is called gram negative bacteria. Now what is this gram positive and gram negative? Gram positive bacteria are usually thick, smooth, and they have a single layered cell wall. Gram negative bacteria, they are generally thin and they have a two layered cell wall. That is the basic feature of the gram positive bacteria and gram negative bacteria. Now in order to identify gram positive bacteria and gram negative bacteria, it deals with the ability of the cell wall to retain the stain. अगर हमें पता करवाना है कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ये ग्राम नेगेटिव है, हमको कैसे पता चलेगा? सो वी आर गोइंग टू अंडरगो अ टेक्निक विच इज कॉल्ड अ स्टेनिंग टेक्निक. जब हम लोग स्टेन यूज करते हैं तो जो बैक्टीरिया का सेल वॉल रहेगा, वो सेल वॉल में एबिलिटी है स्टेन को रिटेन या एब्जॉर्ब करने की या नहीं है, उसके बेसिस के ऊपर द बैक्टीरिया आर बीइंग क्लासिफाइड एज ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. So here we come across a staining technique. Now in this staining technique we use a gram stain. Gram is the name of the scientist and gram stain is somewhat crystal violet color stain. Okay, so I will take a bacterial specimen on a slide. I will add a drop of crystal violet, मतलब ही आपका gram stain. I'll keep it for 1 minute and after that I will wash it with the alcohol. I'll wash it with the alcohol and now I am going to observe the bacteria under microscope. Those bacteria which have absorbed or which have retained the stain are generally called as gram positive bacteria, and those bacteria which have not retained the stain are generally called gram negative bacteria. This is the method to identify the gram positive and gram negative bacteria. राइट तो ग्राम पॉजिटिव कैसा रहता है? आपका थिक रहता है, स्मूथ रहता है एंड उसको सिर्फ सिंगल लेयर सेल वॉल रहता है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो आपका थिन रहता है एंड इट इज हैविंग अ टू लेयर्ड सेल वॉल. ओके, और ग्राम स्टेनिंग कैसे किया जाता है? द सेल वॉल विल बी हैविंग एन एबिलिटी. अगर सेल वॉल ने स्टेन को रिटेन किया है या स्टेन को नहीं रिटेन किया है, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्लासिफाई करते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. एंड दिस आर जनरली यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स. राइट, माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करने के लिए, माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में यूज करने के लिए हम लोग ये स्टेनिंग मेथड यूज करते हैं. Correct. So first procedure, what is the first step in the procedure? You will take a specimen of a bacteria. You will add crystal violet, that is gram stain. Keep it for 1 minute. Then wash it with the alcohol. Now the moment those bacteria which retain the stain are called gram positive, and those bacteria who do not retain the stain are called gram negative bacteria. Thank you.